ના આંકડા આવતા દેખાયા છે તેના ઉપર વાત કરવા માટે કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયरेक्टर रमेश कल्याण रामन जोड़ाई रहा है। सर स्वागत है CNBC बाजार में। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताइए सर कि ओवरऑल आंकड़े इस क्वार्टर के किस तरह से आप देख रहे हैं? Hi, thank you. So first of all, before we start the year, last year has ended very positively. We had a revenue growth of 26% over the previous year. If you look at this year, financial year, also the momentum has been very good for the first 40 days as we speak. Akshaya Tritiya was also very good. And specifically, if you look at Q4, as you know, we started with Omicron, and then by the end of the quarter, we had the geopolitical issues because of the war between Ukraine and Russia, and the gold price fluctuation was very high, the volatility, which of course impacts your demand on a temporary basis. But over and above all those factors, we ended up only with a very marginal degrowth. Even we started with a very high base. So all put together, we are extremely happy with the performance of Q4 and the last financial year. And the first 40 days of this financial year, the momentum is very high, and it is in line with our plan for this financial year. राइट सर। सर इसके साथ एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो ओमिक्रॉन की और साथ ही रशिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन थी उसके चलते हुए गोल्ड प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो उसके चलते हुए आपके मार्जिन्स किस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं आपके मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, तो डिमांड आउटलुक और मार्जिन दोनों के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट इसका रहा है? So if you look at Q4, the margins have improved when compared to Q4 of the previous year. And the gold price fluctuation and the margin, it does not have any relationship, because our margins are basically from the making charges and the stone charges which we levy the customer. So EBITDA margins have improved if you look at Q4 to last Q4, and way forward also we are into improvement of EBITDA margins, because the top line is going to grow and the corporate overheads will remain as it is now, because only the OPEX at a store level is going to increase. So in the next 2-3 years, we target to reach a double-digit EBITDA margin. ओके सर, ओवरऑल अगर हम देखें तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हम आउटलुक देखना चाहें तो ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, वो अपने एक्सपांशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जैसे आपने भी पिछली बार हमारा इंटरेक्शन में बताया था कि आप भी एक जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो किस तरह से हम एक्सपांड होते हुए देख रहे हैं, कहाँ पे आप फ्रेंचाइजीज और स्टोर्स ओपन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले साल के लिए? So unfortunately, I will not be able to give a clean guidance of or a clear guidance for the next year, but usually the same store sales growth usually used to be in the range of 6 to 7%, and we have added 10% new showrooms in the last financial year. The whole revenue has not been recorded in the last financial year, and hence we will get a 5% more revenue because of that. And over and above this, we are planning to open new showrooms, 12 to 15 new showrooms this year. And franchise showrooms are also going to be added over and above this. So all put together, you will be able to summarize the growth which we are targeting for the current financial year. राइट सर। इसके साथ सर एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि अगर हम रीजन वाइज देखें तो किस तरह से ग्रोथ देखने मिली है, अपार्ट फ्रॉम नॉन साउथ रेवेन्यूज़ किस तरह से ग्रो हुई है, और जो आपके मिडल ईस्ट के जो मार्केट है वहाँ पे हम किस तरह के आउटलुक को देखने की उम्मीद रख सकते हैं? So Middle East, if you look at for the past 3 quarters, it has been performing very well, and we have now planned to start our expansion in the Middle East from the internal accruals which we make in that region. And if you look at South, non-South, our target for the next 3 years will be to bring up the non-South revenue share for the company. Almost all the new stores which we are planning for the next 2 to 3 years will be on that region, the non-South region. All the franchisee stores which we are looking for will be in the non-South region, because the margins are better there. And our target for the next 3 years is to bring the South non-South revenue mix to 50-50, which is at 35-65 today.
ओके रमेश, एज फार एज मेरी मेमोरी अगर सही से सर्व कर रही है तो आपकी लिस्टिंग के वक्त भी मैंने ही आपसे बात की थी, और जो एक आउटलुक जो था डिमांड के लिए उनके ऊपर हमने बात की थी, और उसमें आपका एक पर्सपेक्टिव था कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में देखें तो जहाँ पे डिज़ाइनर्स ज्वेलरी है उनकी एक डिमांड जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे आ रही थी, और जो मॉडर्न ज्वेलरी है वहाँ पर भी अभी डिज़ाइनिंग ज्वेलरी को आप ऑफिस वेयर्स में भी यूज़ करने की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो ये कोविड का समय था, ओमिक्रॉन का वक्त था, उसके चलते हुए डिमांड आउटलुक के ऊपर काफ़ी इंटेंस इम्पैक्ट हुए थे। अब यहाँ से आप डिमांड आउटलुक को किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम FY23 की बात करें तो क्या डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? If you look at the demand was very robust immediately after post-COVID. There has been a very good shift from the unorganized to organized, which still continues. And if you look at the design, it depends upon season to season. In the core wedding season, demand is still for the regional or the hyper-local wedding products which people wear for their wedding. And if you look at certain months like a Valentine's Day or a Mother's Day month or a Father's Day month, people look for modern designs which they can gift to their spouse or father or mom. So it depends upon season to season. But on a general basis, we are a very hyper-local jeweler, and India as a core market still believes that regional designs play its role, especially for religious functions. ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल्स रिजल्ट के साथ साथ डिमांड सिनेरियो के ऊपर हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Thank you.